I hope you are all good. So students, in this video we are discussing important current affairs for 19th of December. The session will be quite interesting and important, students. Stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Avia Indra 2025 exercise that was held by Indian Air Force in collaboration with Russia. Then TRAI, they mandated the adoption of 1600 series number for service calls by IRDAI regulated entity. Then DPIIT, they have launched a digital module for EB4 visa to generate sponsorship letters online. Then Banerghata Zoo became has welcomed 8 black capped cappuccino monkeys. All these things and many more will be discussed in this video, students. Stay tuned with us till the end. The session will be quite beneficial for you all. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Students, Indian Air Force, they have hosted the bilateral air exercise by the name Avia Indra 2025 with Russia. This is the name of the exercise that I want you all to remember, and it was with whom? It was with Russia, or you can say Russian Federation Aerospace Force. With them this exercise was conducted. It is scheduled to be held from 15th of December till 22nd of December. Right, and this will be in New Delhi, right? This was declared in New Delhi. Next thing, remember, this is the third edition of this exercise, that is exercise Avia Indra. This exercise will enhance the bilateral defense cooperation between the two countries. Here, this is an Indian Air Force exercise. So from Indian side, Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet will be taking part here. Let me show you. Sukhoi 30 Mark 1, Tejas, IL-78 and Mi-17. These are the aircrafts from India that will be taking part in this exercise. As this is the third edition of the exercise, the first edition was held in 2014. Next is Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI. They have mandated the adoption of 1600 series number for service calls by IRDAI regulated entities, right? This is the series that is for 61600, right? So the number phones here will be starting from 1600, correct? And this is for service and transactional calls to the customers, and it will be starting from 15th of Feb 2026 onwards. The same will ensure, or the aim here is to basically ensure that the customers can easily identify the legitimate calls from regulated financial institutions and differentiate them from the spams or fraud. So if you get a call from 1600, you can easily identify this is for a service call. Next is DPIIT. They have recently launched a digital module for EB4 visa to generate the sponsorship letters online. I repeat, this DPIIT, they have launched this new initiative, that is a digital module that will enable Indian companies to generate Indian sponsors letters online for inviting foreign professionals under electronic production investment business visa on the national single window system. This was launched on 29th of November, and the module is a part of a business visa reforms to simplify processes and enhance the ease of doing business. Right? Take a note of this. So here you will be seeing the platform that will be used here is National Single Window System, and activities such as your equipment of installation, commissioning and payment of the fees, royalties have moved from employment to business visas. Right? And this EB4 visa, it is applied online through this NSWS module that will enable the PLI production linked incentive and non-PLI companies to instantaneously generate digital sponsorship letters with auto-populated forms and Ministry of Corporate Affairs authentication. Right? And each of this letter, sponsorship letter, it will contain a unique ID for e-visa application integrated via the APIs for seamless process. Next, Banerghata Zoo welcomed 8 black-capped capuchin
monkeys, right? So take a note of this. These here 4 males and 4 females has been welcomed here at the Bannerghata Zoo. Where is this zoo? It is in Bengaluru, Karnataka. Direct question, students. Next is India and Saudi Arabia. They have recently signed a visa waiver agreement to facilitate the official travel. Right? So what is the aim here? To facilitate the official travel and boost bilateral cooperation under the Strategic Partnership Council. This visa agreement here, it will provide mutual exemption for short stay visa requirements for the holders of diplomatic and special official passport. Say for example, an official from India is visiting Saudi Arabia, so he can have a short stay visa here, right? So he will be staying, say for example, 2 days. So for this, visa waiver agreement has been signed, and visa B, if any official from Saudi Arabia comes to India for any agreement or for any deal, this visa waiver agreement has been signed for official travel between the two countries. This waiver does not apply to ordinary passport holders or tourist or business travelers. It will be for officials, diplomats only. Correct? Take a note of this. Also remember, our country, India, we are the second largest trading partner of Saudi Arabia right after China. Next is international affairs, students. Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Ethiopia from 16th to 17th of December recently, right? And we recently discussed yesterday that he was on a visit to Jordan. Now from Jordan he is visiting Ethiopia. Correct? He will be here from 16th to 17th of December. Correct? And this marks the first ever bilateral visit of Prime Minister Narendra Modi to an African nation here in Ethiopia. And he met here Abiy Ahmed Ali, the Prime Minister of Ethiopia. This meeting here, a one-to-one meeting was held, right? And restricted and delegation level formats meeting was held here. Here you will be seeing both the countries are talking about enhancing the people-to-people ties. They are talking about how can we enhance the cooperation between the two countries, right? Also, Ethiopian Parliament has become the 18th Parliament worldwide to be addressed by Prime Minister Narendra Modi. Here you see 3 MOUs were signed basically, right? These MOUs are in custom cooperation, UN peacekeeping training, and setting up of data center at Ethiopia's Ministry of Foreign Affairs, and debt restructuring under the G20 framework. Right? Take a note of this. Moving on. Then one more thing, remember, Prime Minister Narendra Modi here was honored with the Great Honor Nishan of Ethiopia, that is the Ethiopia's highest civilian honor. So this question can be asked in your exam, that recently who is that individual or who is that Indian who was honored with the Great Honor of Nishan of Ethiopia? So Prime Minister Narendra Modi was honored here. Moving on, next is Desert Cyclone 2. This is a joint military exercise held between our country India and UAE, that is United Arab Emirates. Correct? Take a note of this. This is the second edition of this exercise. Correct? Desert Cyclone 2 held between the armies of these two countries, and it will be running till 30th of December 2025. What is the location where this exercise is being held? In Abu Dhabi, UAE. Then from Indian side here, 45 mechanized infantry regiment took part in this exercise. Moving on, next is banking and finance, students. SEBI has announced major market reforms in their 212th board meeting. So this meeting was held in Mumbai, Maharashtra, and it has approved a series of regulatory reforms that are aimed at simplifying the market regulations, lowering the transaction cost, and enhancing cost transparency. Right? If we see here the rationalization of broker limits here, the existing broker cap was of 12 basis points. Right, that includes statutory levies, and the cap on the brokerage net of subsidiary amount to 8.59 8.59%, or we can say BPS, basis point, 8.59 basis points. Correct? So earlier we say from the cash was 8.59, which has now been reduced to 6 basis points. If we talk about the derivative transaction, the existing brokerage cap was of 5 basis points, which has been now reduced to 2 basis points, right? An additional of 5 basis points currently permitted to be charged to schemes with exit loads as a transitory measures has now been removed. So I repeat again, students, we are talking about two
caps. One is for cash market and one is for the derivative transactions, right? Cash market transactions and derivative market transactions, right? So the cap on the brokerage, right, which has been now reduced to what? To 6 basis points, right, inclusive of all the levies. For the derivative transaction, it has been now reduced to 2 basis points, right? Also, apart from this, additional of 5 basis points currently permitted to be charged to the schemes with exit loads as transitory measure has now been removed. What is an exit load? Exit load is, for example, what do some mutual funds do is, for example, let's take an example of mutual fund. You invested in a particular mutual fund ABC, right? What this will say is that you are investing in the money, but if you withdraw the money within 1 year, then an exit load of 1% will be charged upon you. That means you have to pay 1% if you withdraw the money within 1 year. So that is your exit load, right? Students, take a note of this. Also, if we talk about the unclaimed amount here, the non-convertible securities will be transferred to IPEF after 7 years if there is no claim on them. And the threshold has been now 5,000 crore rupees, which was earlier 1,000 crore rupees. Next is Axis Bank, Google Pay. They have launched Google Pay Flex Axis Bank credit card on RuPay network. I repeat, Google's mobile payment service, Google Play, right? They are in partnership with Axis Bank Limited, that is one of the India's largest private sector bank. They have launched Google Pay Flex Axis Bank credit card, that is a UPI powered co-branded credit card. This newly launched co-branded credit card built on the RuPay network is designed specifically to help the customers integrate with their everyday UPI transactions. Right, students, take a note of this. Next is PPSL. What is this PPSL? It is Paytm Payment Service Limited, right? A wholly owned subsidiary of 197 Communication to operate as a payment aggregator for offline physical payments and cross-border transactions, both for inward and outward, right? See, what is inward and outward? That means coming from India and going outside from India. Correct? So take a note of this. Here end-to-end payment aggregation service has been provided here, and they have been authorized for offline and cross-border payments here. Authorized by whom? Authorized by Reserve Bank of India. Next, Airtel Payments Bank. They partnered with NBBL. NBBL is your NPCI Bharat Bill Pay Limited. This is a wholly owned subsidiary of NPCI. Correct? So Airtel Payment Bank, they partnered with NBBL to enable the EV wallet recharge. What is EV? Electrical vehicle wallets through Bharat Connect platform. Say for example, you have an electric vehicle, right, and you want to go and do recharge. So on stations, there are certain platforms where you can go and recharge your electric vehicles. You have to pay at those platforms to recharge your vehicle. So in order to pay at those platforms, they must be having their own platforms, they must be having their own wallets, right? So you can recharge those wallets here, right? So Airtel Payment Bank, they partnered with NBBL here so that this will enable the users, they can easily recharge their electric vehicle wallets through Bharat Connect platform, right? Take a note of this. Next is awards and recognition. IDFC First Private and Huron India Self-Made Entrepreneurs of the Millennia. Eternal's founder and CEO Dipender Goyal tops the list here, right? As you can see him in the picture, he is the founder of the Eternal is the basic parent company of Blinkit, Zomato, right, Hyperpure, etc. So here Dipender Goyal, right, this is, first of all, remember, this is Huron India. They partnered with IDFC First Bank, right, and this basically they have released together what? The third edition of top 200 self-made entrepreneurs of the millennial list, correct? And as per the report, it is Dipender Goyal who has secured the top position here, followed by Radhakrishan Damani on second, Rahul Bhatia and Rakesh Gangalwal on the third position, right? Take a note of this. So, and also this is the third edition of this report that has been released. If we talk about the youngest founders here, Kavalya Vora 22 and Aditya Palisha 23, founders of Zepto are the youngest founders here. If we talk about the women entrepreneurs, 20 were here, led by Falguni Nair and Advita Nair of Nykaa. The youngest woman is Advita Nair, 34 of Nykaa. 34 is the age here. Correct? So take a note of all the data can be asked here. Moving on, CRPF officer Dinesh
Khatak conferred with the Union Home Minister's Efficiency Medal. This award is given for exemplary services, discipline and outstanding contribution to the national security given by the Ministry of Home Affairs. Currently, if we talk about Dinesh Khatak, he is a senior CRPF officer hailing from Jind district in Haryana and has been honored with this Union Home Minister's Efficiency Medal, also known as your Kendriya Grah Mantri Dakshata Padak. Next is appointments and resignation, students. We are talking about ACC, that is Appointments Committee of the Cabinet. It has approved the reappointment of Ashwini Tiwari as SBI's Managing Director till December 2027. With this reappointment, SBI has now 4 Managing Directors in place, that is Ashwini Kumar Tiwari, Rana Ashutosh Kumar Singh, Rama Mohan Rao Amara and Ravi Ranjan. So these are the 4 Managing Directors, right? And SBI can have a maximum of 4 only, right? So take a note of it. Then we are talking about science and technology, students. Recently, if we see, Indian Navy has commissioned INAS 335 Ospreys at INS Hansa. What is this INAS? INS is your Indian Naval Air Squadron 335, right? So Indian Navy has commissioned this INAS 335 Ospreys at INS Hansa in Goa. It is marking a key milestone in the modernization drive, and this commissioning ceremony, it was presided over by Admiral Dinesh Kumar Tripathi, the Chief of Naval Staff. Here this INAS 335, it is a frontline naval aviation squadron helicopter operating MH-60R Seahawk helicopters, acting as an eyes, ears and first hunters of the fleet. Then the squadron of this INAS 335, it is led by Captain Dhrendra Bhisht. Correct. Here if we see this INAS, remember it has been commissioned at Hansa, INS Hansa. Important, students, take a note of this. So this Indian Naval Air Squadron, this is the name of the squadron, and this squadron is having what? It is having these helicopters. What is the name of that helicopter? MH-60R helicopter. Moving on, students. Next, first thing we have seen the event commissioning of this squadron. Second, MH-60R and squadron. Then second is final batch of AH-64E Apache attack helicopters has been delivered to Indian Army, who is the manufacturer, Boeing USA. Total 6 helicopters has been delivered here, right? So 2 events we are talking about. First event is for INAS 335. This is the name of the squadron. This squadron is having MH-60R helicopters. Second event is about AH-64E Apache helicopters. It has been delivered. 6 helicopters has been delivered. Manufactured by whom? Boeing USA. Next is obituary, students. Pulitzer winning journalist Peter Arnett has recently passed away, and he was the winner of the Pulitzer Prize, right? Known for his frontline reporting in Vietnam and Gulf War. Passed away in California, USA at the age of 91, born in 1934 in New Zealand, and he won this Pulitzer Prize in 1966. Next is important day, students. International Migrants Day, observed on 18th of December. This day is observed to raise awareness about the migrants, right? Because migration happens because of certain reasons. Either they are facing challenges in their own location or country, or for betterment of their life, for better quality, for better job opportunities, right? Or for protecting of their human rights, right? So there can be multiple reasons. So this day is observed on 18th of December every year to recognize migrants' contribution and highlight the challenges they face for protecting their rights. This year it was the 25th edition of the International Migrants Day. There is a theme also, students. Theme being My Great Story, Culture and Development. This is the theme that I want you all to remember here. First time this day was observed in the year 2000. Next is World Arabic Language Day, observed on 18th of December. This day is observed basically every year to mark the adoption of Arabic as one of the 6 official languages in 1973, and it is to promote multilingualism and linguistic equality. This day it commemorates the 52nd anniversary of the Arabic being recognized as an official language of the United Nations. Next, students, these were your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all.
Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. Based on this daily current affairs video, we provide you weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise videos that will help you better in your preparation, and these videos are based on the MCQs. Now students, let's move to the revision part. How long will India's Hitesh Kumar S. Makwana elected to serve as the co-chair of the United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific, along with Woo Suk Chu from Republic of Korea in October? So, how long will India's Hitesh Kumar elected to serve the co-chair here? So, it is for the term 2025 to 2028. Next, according to the Mercer Charter Financial Analysts Institute Global Pension Index, mention the country which is not among the top 5 in the pension index. It is Philippines. Right? It is not among the top 5. Netherlands first, then Iceland second, then Denmark it is third, Singapore it is fourth, Israel is fifth. Next, according to the World Directory of Modern Military Aircraft rankings, which of the following is not among the world's top 5 most powerful forces? It is China's People's Liberation Army Force. Right? Take a note of this. Who is on the top? United States Air Force, then United States Navy, then Russian Air Force, then United States Army, then United States Marine Corps, and on 6th position is Indian Air Force. Next, mark the correct statement regarding the key findings of the Global Forest Resource Assessment 25 released by Food and Agriculture Organization in October month. Which of the following is the correct statement it is asked? So A is right, B is right, C is wrong. C is saying that in terms of the global forest gain, Russia ranks first, followed by India and China. Is it so? So first remember, Russian Federation is on top, then Brazil is on second, then Canada on third, then USA fourth, then it is fifth China, and on 6th position is our India. Next, choose the financial center that is not among the top 5 in the 38th Global Financial Center Index released in October by China Development Institute and ZN Partners. So choose the financial center, right, that is not among the top 5. So Mumbai, India is not among the top 5 here. New York, USA on top, then London on second, Hong Kong on third, Singapore on fourth, then San Francisco on 5th, and GIFT City, right, of India is on 6th position. Take a note of this students, and then it is Mumbai, and then it is New Delhi. Next is, what is the total value of the Sovereign Exposure Exchange Agreement signed between the Asian Development Bank and World Bank in October to boost the lending for the developing nations? So it is $3 billion. Total value of the Sovereign Exposure Exchange Agreement is $3 billion. This EEA, that is Exposure Exchange Agreement, right, it is acts as a risk management tool, and it enables the multilateral development banks to lower the portfolio concentration by risk by swapping exposure from countries with large sovereign loans. And this is Asian Development Bank's first EEA with World Bank and 6th EEA with other multilateral development banks. Next is, who headed the SEBI constituted working group that proposed increasing transaction fees for clearing corporations such as NSE Clearing Limited in October 2025. So who headed this SEBI constituted working group? It was headed by R.S. Gandhi. It was headed by whom? It was headed by R.S. Gandhi. This move, it will bolster the financial independence of these corporations and strengthen the balance sheet. Here the fee structure, if we see, currently NSE, they are receiving nearly 5 to 6% of the fees that NSE collects from the members. A revision of the charge for the clearing corporation is expected to increase the share to 25% or even a little higher. Next is, who was honored with the BRICS International Award 2025 for the contribution to spiritual education, cultural development and maritime innovation at an event hosted by State Duma of Russian Federation in Moscow in October 2025. So who was honored here with BRICS International Award? This is the direct question that can be asked, and this is an important question. So Abusyopan Kharkarov was honored here. He is the former Deputy Prime Minister of the Republic of Dagestan, who was honored with the BRICS International Award. This is for his contribution to spiritual education, cultural development and maritime innovation. Next,
who won the 2025 British Academy Book Prize in October for his book titled The Burning Earth, An Environmental History of the Last 500 Years. So, who won the 2025 British Academy Book Prize? It was won by Sunil Amrit. Right? Indian origin historian Sumrit Amrit has won the 2025 British Academy Book Prize for the book that is The Burning Earth, An Environmental History of the Last 500 Years. Next is in October, Union Minister Rajnath Singh was conferred with the honorary rank of Lieutenant Colonel upon Neeraj Chopra in Voluntary Military Force of India. In which Voluntary Military Force of India? So, tell me, Union Minister Rajnath Singh conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel to Neeraj Chopra for which voluntary force of India? It is Territorial Army. Next, who was sworn in as the transitional president of Madagascar in October after a military coup confirmed by the High Constitutional Court of Madagascar? Name that individual. Right option is Michael Randrian. Right, Colonel Randrian Rina. Right, Michael Randrian Rina. Right, was appointed here. Take a note of this. Next is in October, Gujarat state government under the Chief Minister Bhupendra Patel expanded their cabinet, including 19 ministers, 19 new ministers and retaining the 6, bringing the total strength to 26. So 19 are new here and 6 are retained. So the total strength become 26. Who was elevated here as the Deputy Chief Minister, becoming the 5th Deputy Chief Minister of the state of Gujarat? So right option is Harsh Ramesh Kumar Sanghvi has been appointed as the Deputy Chief Minister of Gujarat. Take a note of this, students. Next is who was elected as the President of the Indian Cricket Association in October, becoming the first woman to lead the organization. So, Shantha Rangaswamy was elected as the President of Indian Cricket Association. Take a note of this. Next is mention the tenure of Justice Pratibha M. Singh of Delhi High Court as the chair of the World Intellectual Property Organization Advisory Board as announced in October. If we look at the option, right option is for what is the term? It is 2025 to 2027. Right option is this. Next, who was elected as the Japan's first female Prime Minister in October? Right option is Sanai Takaichi. Correct? Take a note of this. Direct question. And she succeeded whom? She succeeded Shigeru Ishiba. Next, in October, Emirates New Development Bank acquired how much % stake in RBL Bank through a preferential issue of shares worth 26,850 crore rupees? It is 60% share here, right? And what is the amount it was acquired for? 26,850 crore rupees. Next, in October, DRDO, they successfully tested the indigenously military craft parachute system with Indian Air Force from an altitude of how much? From an altitude of 32,000 feet. The test was conducted by the test jumpers of the Indian Air Force, right? Take a note of this. Next is in October, Dr. V. Narayanan, the chairman of ISRO, announced that India's maiden human space flight mission, that is Gaganyaan, is scheduled for 2027, while ISRO aims to launch their first crewed moon mission by which year? So ISRO is planning to launch their first crewed moon mission by 2040, and Gaganyaan mission, that is the maiden human space flight mission, is planned by 2027. Next, name the fighter jet that was unveiled by Union Minister for Defence Rajnath Singh on 17th of October at Hindustan Aeronautics Limited facility, that is in Nasik facility. So which is that fighter jet we are talking about? It is Tejas Mark 1A fighter jet. Next, identify the country that represented by Olympic champion Ariana Titmus, who announced her retirement from competitive swimming. So name that country, identify that country we are talking about. It is Australia. She is from Australia. Next, in October, Union Minister of Home Affairs, that is Amit Shah, he recently announced that Commonwealth Association has approved India's bid to host the sanitary edition of 2030 Commonwealth Games. In which Indian city will the event will be hosted? That means now India will be hosting the 2030 Commonwealth Games, that will be in Ahmedabad, Gujarat, right? That means the Commonwealth Association, they have approved India's bid that we can now host this event in India, and that too in India, where it will be hosted in Ahmedabad, Gujarat. Important students, take a note of this. Next, also we have bid for the 2036 Olympic Games also. Let's see how that plays out.
Next, identify the international multi-sport event where Indian Olympic gold medalist Abhinav Bindra was appointed as the torchbearer in October month. So, identify that international multi-sport event. It is Milano Cortina 2026 Winter Olympics. Next, name the country that secured the first ever FIFA Under 20 World Cup title after defeating Argentina by 2-0 in the final match held in Santiago, Chile. So, name that country that secured the first ever FIFA World Cup title. It is Under 20 FIFA World Cup title. It is Morocco. Next is Tomichi Murayama, right, known for his 1995 World War II apology to the Asian victims who passed away on 17th of October, was the former Prime Minister of which country? Was the former Prime Minister of Japan. Also remember, he served as the Japan's 81st Prime Minister and it was from 1994 to 1996. Next is Chen Ning Yang, the Chinese-American physicist and Nobel laureate who passed away in October, won the 1957 Nobel Prize in Physics for discovering what? So it was for discovering parity violation in weak nuclear interaction. And remember the name, remember the year in which he won the Nobel Prize in Physics and the reason for which he won. Next is Dr. Eknath Vasant Chintis, a pioneering Indian space scientist and key architect of India's early space program, passed away in October, in which year he was honored with the Padma Bhushan Award for his contribution in science and technology. So, Dr. Eknath Vasant Chintis, right, a pioneering Indian space scientist and key architect of India's early space program, passed away in October. In which year he was honored with Padma Bhushan? He was honored with Padma Bhushan in 1985. Right option is option 3. Next is when is International Snow Leopard Day, also known as the World Snow Leopard Day, observed globally to raise awareness about the conservation of snow leopard, that is Panthera uncia. So it is on 23rd of October. Right, first time observed in 2014. Next, in October, which country gifted Prussian blue capsules to Indonesia to help treat contamination caused by the radioactive isotope cesium-137? So, which country gifted the Prussian blue capsules to Indonesia? It was gifted by our country, India, right? And it was a very good gesture. Next is, which fintech company unveiled India's first unified corporate card ecosystem for businesses on October? It is Encash. Correct. Next, NMDC, National Mineral Development Corporation Steel Limited. It became India's first company to receive the BIS certification for hot rolled steel used in the pipeline transportation in October. Question is, in the abbreviation BIS, what does the letter B stands for? It is Bureau. Bureau, BIS, that is your Bureau of Indian Standards, right? So I for India, Indian, and S for standards. Correct. And this certification will ensure the NDMC steel's product meet the highest national quality and safety standards. Next is, mention the company that introduced India's first fully electric two-seater light sport aircraft for flight training and personal aviation on 16th of October 2025. So it is which company? It is Pulinam Aerospace Technologies. And the first prototype, it is expected to be launched in within 12 to 18 months. Next, where did the 11th India International Science Festival held from December 6th to 9th as announced by Union Minister for Earth Science Dr. Jitendra Singh? If we look at the option, it is Punjab University of Chandigarh. Then next is, United Nations recognized the Slovenian town of Bled as the best tourism village. What is the official currency used in Slovenia? So here the currency that is used is Euro. Next, the Election Commission of India enabled the C-Vigil mobile application on the Election Commission internet platform in October to report model code of conduct violations. Identify the established year of ECI. Direct question. So ECI was established in 1950. Here you need to remember that ECI has enabled the C-Vigil mobile application on the Election Commission internet, that is ECINET. So this was enabled by whom? Election Commission of India. Next, in October, ISRO, they have announced to launch 6.5 ton Bluebird 6 satellite for the advanced communication and scientific research. Who currently serves as the chairman of ISRO? So who is the chairman? V. Narayanan. But you need to remember here that ISRO, they have announced the launch of 6.5 ton weight. This is the weight of this satellite, that is Bluebird. Name is Bluebird 6 satellite. Section. First question is renew energy. Right?
they have secured how much amount from Asian Development Bank recently for funding India's first round-the-clock peak renewable energy project that is located in Andhra Pradesh. Second question, IFC, International Finance Corporation, the arm of World Bank, they will be investing how much amount in Axis Max Life Insurance that will boost the solvency and support India's insurance for all vision of 2047. Then third question, in space, they along with SIDBI, they have launched how much amount venture capital fund. What is the amount of this venture capital fund that will boost India's private space sector? Fourth question, recently tell me, PSEB appointed whom as the next chairman and managing director of Gas Authority of India Limited, of GAIL. Fifth question, tell me who has been elected as the UNESCO's Director General, 12th UNESCO's 12th Director General, and who he will be succeeding. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एविया इंदिरा एक्सरसाइज की। देन हम बात करेंगे 1600 सीरीज की नंबर सीरीज यहाँ पे अभी अडॉप्ट कर ली गई है TRAI के द्वारा, जो कि हम देखेंगे सर्विस कॉल्स के लिए यूज़ की जाएगी। देन EB4 वीज़ा, राइट, इसके लिए डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है जो कि जनरेट करेगा स्पॉन्सरशिप लेटर्स को ऑनलाइन, ID के साथ यहाँ पे रहेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। देन बन्नरघट्टा जू जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, इन्होंने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को भी वेलकम किया है, 4 मेल एंड 4 फीमेल। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल सेशन आप सभी के लिए रहेगा। नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी होस्ट किया गया बायलेटरल एयर एक्सरसाइज एविया इंदिरा 2025 को रशिया के साथ मिलकर, राइट। तो इंडिया से इंडियन एयरफोर्स, रशिया से रशियन फेडरेशन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। 15 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। देन ये थर्ड एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ये जरूर मार्क करके चलेंगे। पहला एडिशन 2014 में हमें देखने को मिला था। इस एक्सरसाइज में अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट, तेजस, IL-78। नेक्स्ट पे आते हैं TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने मैंडेट किया अडॉप्शन ऑफ 1600 सीरीज नंबर को फॉर सर्विस कॉल्स। देखो, सर्विस कॉल्स के लिए अब जो भी कॉलिंग होगी 15 फरवरी 2026 से, वो नंबर 1600 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। इससे क्या होगा कि हम पता लगा सकेंगे कि कोई कॉल फ्रॉड है या कोई स्कैम तो नहीं कर रहा हमें, क्योंकि अगर इस कॉल से नंबर नहीं आएगा, इस नंबर से स्टार्ट नहीं होगी कॉल, तो वो एक फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्कैम्स को रोकने में, फ्रॉड्स को रोकने में, करेक्ट। एंड ये इंश्योर करेगा कस्टमर ट्रस्ट को, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन एनहेंस होती हुई दिखेगी, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं DPIIT। इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल मॉड्यूल फॉर EB4 वीज़ा को टू जनरेट स्पॉन्सरशिप लेटर्स ऑनलाइन, राइट। तो ये डिजिटल मोड यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो एनेबल करेगा इंडियन कंपनीज को कि वो इंडियन स्पॉन्सरशिप लेटर्स को ऑनलाइन ला सकें फॉर इन्वाइटिंग फॉरेन प्रोफेशनल्स अंडर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा 4 को, EB4 वीज़ा को, राइट। इससे PLI स्कीम के अंडर, नॉन PLI स्कीम के अंडर वीज़ाज इशू किए जा सकेंगे ईजिली, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये किसके अंडर किए जाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर ये इशू किए जाएंगे। मूविंग ऑन, बन्नरघट्टा जू, ये कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। इन्होंने वेलकम किया 8 ब्लैक केप्ड कैपुचिन मंकीज को, राइट, जिसमें से 4 मेल रहेंगे एंड 4 फीमेल्स रहेंगी,
राइट, एंड ये किसके अंडर किया गया? अंडर एन इंटरनेशनल एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर। मूविंग ऑन, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इनके द्वारा वीज़ा वेवर अग्रीमेंट साइन किया गया टू फैसिलिटेट ऑफिशियल ट्रैवल। सभी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, जो डिप्लोमेट्स हैं राइट उनके लिए ये अवेलेबल रहेगा। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपको 2 या 3 दिन के लिए इंडियन डेलीगेट को सऊदी अरेबिया जाना है राइट, तो उनको वीज़ा फ्री एंट्री यहाँ पे दिया जाएगा, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है राइट। ईजिली वो 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पे जा सकेंगे एंड वो वापस आ जाएंगे। वीज़ा भी अगर किसी सऊदी प्रोफेशनल्स को ऑफिशियल को डिप्लोमेट को इंडिया आना है किसी काम से, तो वो 2-3 दिन के लिए यहाँ पे इजीली आ सकेंगे एंड शॉर्ट स्टेज के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो एग्जाम्प्ट यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के द्वारा ये वीज़ा वेवर एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इंडिया सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पहली पोजिशन पे आता है चाइना एंड देन है हम इंडिया। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इथियोपिया के विजिट पे थे फ्रॉम 16 टू 17 ऑफ दिसंबर। अभी सबसे पहले इन्होंने जॉर्डन विजिट किया, जॉर्डन के बाद ये इथियोपिया पे आए हैं राइट। इथियोपिया में हम देखेंगे यहाँ पर इनको ये थे ऑन द इन्विटेशन ऑफ एबी अहमद अली जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इथियोपिया के, एंड ये पहली बायलेटरल विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टू अफ्रीकन नेशन राइट। यहाँ पे कई सारे 1-to-1 नेगोशिएशन हुए, यहीं पे हमने देखा सिविलाइजेशन इवन पीपल टू पीपल टाइज के ऊपर काम किया गया। फिर इवन यहीं पे हम देखेंगे कि ये 8वां पार्लियामेंट बना इथियोपिया का जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एड्रेस किया गया। 3 MOUs यहाँ पे साइन हुए, कस्टम कॉपरेशन, UN पीस कीपिंग ट्रेनिंग एंड सेटिंग अप ऑफ डाटा सेंटर्स के लिए एट इथियोपियाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एंड इवन जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसके ऊपर बात की गई अंडर द G20 फ्रेमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डेजर्ट साइक्लोन 2। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और UAE के बीच में, जो अबू धाबी में हमें देखने को मिली। लोकेशन अबू धाबी, डेजर्ट साइक्लोन द सेकेंड राइट। ये एक्सरसाइज है आर्मीज के बीच में कंडक्ट कराई गई। 30 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज यहाँ पे चलेगी। इंडियन आर्मी एंड UAE लैंड फोर्स के बीच में एक्सरसाइज है एंड सेकेंड आप देख सकते हैं, तो ये सेकेंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। सेबी ने अनाउंस किया मेजर मार्केट रिफॉर्म्स इन देयर 212th बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। कैश मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए जो ब्रोकरेज था राइट, इट हैज नाउ बीन रिड्यूस टू 6 बेसिस पॉइंट्स राइट। डेरिवेटिव मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए जो ब्रोकरेज था, जो कैप था करेक्ट, इट हैज नाउ बीन रिड्यूस टू 2 बेसिस पॉइंट्स। इनके एडिशनल 5 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे करंटली परमिटेड है एडिशनल ड्यूटी टू बी चार्ज विद एग्जिट लोड्स। एग्जिट लोड क्या होता है? मान लो कोई म्यूचुअल फंड आपने बाई किया, फॉर एग्जांपल है ABC नाम से, तो ये ABC म्यूचुअल फंड क्या कहेगा कि अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मतलब उस पैसा निकालने के लिए 1 साल के बाद देते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है राइट। तो ये होता है आपका एग्जिट लोड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्सिस बैंक। गूगल पे, इन्होंने गूगल पे फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। किस नेटवर्क पे? रुपे नेटवर्क पे इसको लॉन्च किया गया है। UPI पावर्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये रहने वाला है, इससे आप UPI ट्रांजैक्शंस भी इजीली कर सकेंगे। नेक्स्ट PPSL, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल फॉर ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस राइट। ये आपके ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब पैसा इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में आए, उसके लिए भी यहाँ पे इनको अप्रूवल मिल गया है कि ये ट्रांजैक्शंस पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सेबी, अगर बात करें अप्रूवल किनके द्वारा मिला इनको, सेबी के द्वारा, RBI के द्वारा ये अप्रूवल मिला है। मूविंग ऑन, एयरटेल पेमेंट बैंक, इन्होंने पार्टनर किया NBBL क्या है? NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है NPCI की। इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक कार है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज होना है, तो ये पेमेंट करेंगे इनको कि भाई आप पैसे लो, हमें हमारी गाड़ी चार्ज कर दो। तो ये जो पेमेंट होगी ना, से फॉर एग्जांपल ये ABC कंपनी है, इनका अपना वॉलेट है, आप तो क्या करेंगे, यहाँ से वॉलेट से पैसा ट्रांसफर करेंगे इनको कि अब आप पेमेंट रिसीव हो गई, अब आप हमारी गाड़ी को रिचार्ज कर दो, चार्ज कर दो। तो ये जो पेमेंट, ये जो वॉलेट है राइट, इसमें पैसा डलने के लिए कौन
अप्रूवल देगा, कहाँ से पैसा डलेगा, राइट। तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एनबीबीएल के साथ पार्टनर किया ताकि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ये जो वॉलेट्स होंगे, राइट, इनमें पैसा डाल सकें थ्रू भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने पार्टनर किया है ईवी वॉलेट्स में पैसा रिचार्ज करने के लिए? उनको एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट एंड ह्यूरन इंडिया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लिस्ट रिलीज किया है टॉप 200 सेल्फ मेड मिलियनर्स की, या फिर हम बोले टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनियर 2025 की लिस्ट। ये थर्ड एडिशन है इस लिस्ट का जो भी रिलीज किया गया है। एंड दीपेंद्र गोयल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एटर्नल के, जिनको पहले जोमेटो के नाम से जानता था। एटर्नल के अंदर अब हाइपर प्योर, जोमेटो, ब्लिंकिट आते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट में विद द वैल्यूएशन ऑफ 3,20,700 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन के साथ, जो कि एक 27% का इंक्रीज है फ्रॉम द लास्ट ईयर। यहीं पे अगर कुछ और डाटा देखें, जैसे दीपेंद्र गोयल टॉप पर है, देन राधा कृष्ण दमानी जी सेकंड पर, राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल थर्ड पर। यहीं पे अगर हम देखें फाइनेंशियल सेक्टर में 47 कंपनीज है। फिर आ जाते हैं यंगेस्ट फाउंडर्स इस लिस्ट में कौन रहे? कावेल्ला वोरा एंड आदित्य पलीचा, ये जेप्टो के को फाउंडर्स हैं। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो फाल्गुनी नैयर एंड अद्विता नैयर ऑफ नायका यहाँ पे टॉप पर रहे। यंग वीमेन की बात करें तो अद्विता नैयर जो कि नायका की हैं, ये यहाँ पे टॉप पर रही, ठीक है। एंड ये थर्ड एडिशन है स्टूडेंट्स इस लिस्ट का। इसके बाद आ जाते हैं सीआरपीएस ऑफिसर दिनेश खाटक जी, इनको कन्फर किया गया यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल से। यह अवार्ड दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ये एग्जाम्पलरी सर्विसेज के लिए, डिसिप्लिन एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, राइट, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। वैन किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एंड सीनियर सीआरपीएफ ऑफिसर दिनेश खाटक जी को सम्मानित किया गया। फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं स्टूडेंट्स। एसीसी ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ अश्विनी तिवारी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, एंड इनका टर्म 27 दिसंबर 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इनकी रीअपॉइंटमेंट के बाद एसबीआई के पास 4 इनके एमडीज हैं, जो कि 4 ही होने चाहिए। कौन कौन? अश्विनी कुमार तिवारी, राणा आशुतोष कुमार सिंह, रामा मोहन राव अमारा एंड रवि रंजन। इसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक पे स्टूडेंट्स। इंडियन नेवी ने कमीशन किया INAS 335। ये बेसिकली क्या है? ये स्क्वाड्रन का नाम है ऑस्प्रेस, राइट। ये कहाँ पे कमीशन किया गया? INS हंसा पे इसको कमीशन किया गया है इन गोवा। एंड ये स्क्वाड्रन में कौन से हेलीकॉप्टर रहेंगे? MH-60R हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ये तो थी पहली चीज। दूसरी चीज है फाइनल बैच ऑफ AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी डिलीवर किया गया। 6 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिलीवर किए गए हैं। मैन्युफैक्चर रहेगा बोइंग USA, इनके द्वारा डिलीवर किए गए। किसको? इंडियन आर्मी को डिलीवर किए गए, ठीक है। तो पहला इवेंट था INAS 335, ये स्क्वाड्रन का नाम है। एंड MH-60R ये हेलीकॉप्टर्स रहेंगे यहाँ पे, ये सेकेंड स्क्वाड्रन है MH-60R हेलीकॉप्टर्स की। दूसरा क्या है? AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए गए हैं। 6 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिलीवर किए गए। किसने बनाए? बोइंग USA ने बनाए। किसको डिलीवर किए गए? इंडियन आर्मी को डिलीवर किए गए। चलिए फिर ऑबिटरी पर आते हैं स्टूडेंट्स। पुलित्जर विनिंग जर्नलिस्ट पीटर आर्नेट, इनका रिसेंटली निधन हो गया। कैलिफोर्निया USA में इनका निधन हुआ 91 की एज में। 1934 न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ था एंड 1966 में इनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि जर्नलिज्म के लिए होता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। माइग्रेंट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड इनके राइट्स को एडवोकेट करने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। इसकी थीम याद रखेंगे, माइग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पे थीम रहेगी। एंड 25वां एडिशन इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अरेबिक लैंग्वेज जो कि वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी 1973 में, राइट, UN की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड मल्टीलिंग्विज्म एंड लिंग्विस्टिक इक्वालिटी को प्रमोट कराने के लिए यह डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने 52nd एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी ऑफ अरेबिक, UN अरेबिक लैंग्वेज और वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज। इसकी एक थीम याद रखेंगे, इनोवेटिव पाथवेज फॉर अरेबिक, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर अ मोर इंक्लूसिव लिंग्विस्टिक फ्यूचर। ये थीम जरूर मार्क करके चलिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होगी। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं सुबह 5 बजे। इस वीडियो को ज़रूर देखा करो, बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। डेली बेसिस में जो भी न्यूज़ होती हैं हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसी के बेसिस पे वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज हम लाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। ये MCQ बेस्ड रहता है। तो चलिए अब रिवीजन पार्ट पे चलते हैं।
को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अभी इंडियन नेवी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 47 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ताकि अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को बनाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको प्रमोट करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, जिनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं, इनका काफ़ी यूसेज बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हर सेक्टर में। आप उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए, यहाँ पर सर्वेलेंस के लिए, स्प्रेइंग के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, वाटर स्प्रे करने के लिए। वहीं पे अगर हम डिफेंस सेक्टर में देखें तो सर्वेलेंस पर्पस के लिए, अटैकिंग के लिए, राइट। कहीं पे हमें मान लो जाके पता करना है कि कहीं पे कोई भी एनिमी छुपा हुआ है या नहीं, या फिर किसी एरिया में जाके हमें रिस्क फ्री अटैक करना है, तो हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। इवन अभी रशिया एंड यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है अटैकिंग के लिए। इवन चाइना तो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं ड्रोन का यूज़ कर रहा है ताकि एयर लाइट शोज कर सके, करेक्ट। तो काफ़ी सारे ड्रोन्स को एक साथ लाके कई सारी इमेजेस बनाई जाती हैं जो कि एक बहुत भव्य रूप देती है। तो यहाँ पे ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ बढ़ने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पे अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की तरह यूज़ किया जाएगा इसको। कौन सी कंपनी बना रही है? वो है आईरॉव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने मेरी डीपीआईआईटी के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके एंड जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में उसको ग्रो किया जा सके। तो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है थर्मो फिशर साइंटिफिक, TFS। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पार्टनर किया बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ, जो कि एक फुटबॉल क्लब है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, ताकि इंडिया में जो स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एक इंक्यूबेशन सेंटर है वो सेटअप किया जा सके। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया यहाँ पर, राइट। एक अग्रीमेंट साइन किया गया डॉर्टमंड बोरुसिया डॉर्टमंड फुटबॉल क्लब के साथ, राइट। इससे क्या होगा? स्पोर्ट्स सेक्टर में हम देखेंगे कि इनोवेशन होती हुई दिखेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ती हुई दिखेगी एंड कई सारे स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में आते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। 3 साल का ये एमओयू रहेगा ताकि रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक मिल सके टू इवेल्युएट द इंडियाज डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। देखो स्टूडेंट्स, टूरिज्म का हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी जगह की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। काफ़ी सारा जॉब एम्प्लॉयमेंट्स इससे मिलती हैं, रोज़गार लोगों तक पहुँचता है। तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिलते हैं एंड जो ये फॉरेन टूरिस्ट्स होते हैं ना, इनका फीडबैक लिया जाएगा। अब इस फीडबैक से क्या होगा? जो फीडबैक मिलेगा उससे हमें एक डाटाबेस मिलेगा कि पता लगेगा कि इंडिया में जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट किया जाएगा, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जाएगा एंड बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए फॉरेनर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आएँ एंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इंडिया को देखें। तो किस कंपनी ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेट किया? वो है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं TEPA, द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इन्होंने अभी इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ पार्टनर किया ड्यूरिंग द प्रॉस्पेरिटी समिट। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी कंट्रीज पार्ट नहीं है EFTA की? तो डेनमार्क यहाँ पर EFTA का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, उस डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ एंड इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ पार्टनर किया एंड एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन किया। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर यहाँ पे एमओयू साइन किया ताकि जो रेलवे डिजास्टर रिस्पॉन्स है ना उसके ऊपर काम किया जा सके। तो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, IR दैट इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड तीसरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF। इनके द्वारा यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ। नेक्स्ट, उस डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स अक्टूबर के महीने में, टू स्ट्रेंथन द डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। देखो वाटर रिसोर्सेज क्वाइट इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इसी के ऊपर हम देखते हैं वाटर के ऊपर हमें सस्टेनेबली वाटर को यूज़ करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन आज के टाइम भी क्लीन वाटर नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में साफ पानी लोगों को मिल सके एंड कई सारे सैनिटेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा सके, इसीलिए किस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया? वो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। फिर आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया IIT मद्रास के साथ ताकि रिसर्च को
इसको स्ट्रेंथन किया जा सके रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को इन नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग। तो इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे आईआईटी मद्रास के साथ ये एमओयू साइन किया गया। फिर आ जाते हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने एक एमओयू साइन किया कि स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर इस्टेब्लिश किया जा सके भोपाल में। तो वो कौन सी है? फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड जीएसएम एसोसिएशन के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके टेलीकॉम पॉलिसी रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को? तो वो है एनसीए, नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी। मूविंग ऑन, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ फॉर द स्किलिंग प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री विरासत का समावर्धन स्कीम, जो कि है पीएम विकास स्कीम। पीएम विकास स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि उनको ग्रो किया जा सके, स्किल डेवलपमेंट की जा सके एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको ले जाया जा सके। तो इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। वो है आईआईटी पलक्कड़। कहाँ पर है ये? केरला में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने अभी एक एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, ताकि एक 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके। तो 15 गीगावाट में से जो 10 गीगावाट रहेगी वो रहेगी सोलर की, एंड जो 5 गीगावाट रहेगी वो रहेगी विंड एनर्जी की, एंड ये दोनों क्या है? रिन्यूएबल एनर्जीज है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये साइन किया? वो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जिन्होंने एक एमओयू साइन किया विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर MEITY इन अक्टूबर, ताकि डेवलप किया जा सके इंडिजिनियस ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस को। वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, उस आइडेंटिफाई करो उस पब्लिक सेक्टर बैंक को जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ताकि जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं रक्षक सैलरी पैकेज के अंडर टू द आर्म्ड पर्सनल्स, उसका बेनिफिट उनको मिल सके। तो वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने यहाँ पे ये एमओयू साइन किया एंड बीएसएफ के लिए ये रक्षक सैलरी पैकेज अनाउंस किया गया? तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओटीटी क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, जी हो गया, करेक्ट? ये सारे आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो किस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज एंड फिकी के साथ पार्टनर किया, ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिल सके? तो वो है नेटफ्लिक्स इंडिया। ये यहाँ पे कई सारी वर्कशॉप्स कराएंगे, राइट? इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, गेमिंग कॉन्टेस्ट होंगे, राइट? इवन कई सारे हमें इवेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा टू फर्दर, ताकि वो अपना काम कर सके। काइंड ऑफ हैकाथॉन्स भी कराए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने अभी ज्वाइन किया हैंड्स विद MEITY इन अक्टूबर टू सपोर्ट इंडिया सॉवरन AI डेवलपमेंट? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, AI कैसे वर्क करता है कि यहाँ पे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ना उनको ट्रेन किया जाता है, एंड उसको ट्रेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस चाहिए। तो ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, ये प्रोवाइड कराएंगे ICAI, ताकि AI को ट्रेन किया जा सके एंड फर्दर जब AI ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे उसको मीनिंगफुल आउटपुट दिया जा सके। तो ICAI ने MEITY के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। नेक्स्ट, DRDO, इन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ताकि 300 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे पार्टनर किया इन्होंने? वो है SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया इंडियन नेवी के साथ टू स्ट्रेंथन शिप बोर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू डिजाइन इंटरवेंशन। कौन सी IIT रहेगी? वो है IIT दिल्ली, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, इन्होंने एक MOU साइन किया विद इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी टू जॉइंटली एक्सपोर्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू अ फ्रेंडली नेशन। कौन सा रहेगा? वो है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ टू जॉइन प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। तो केरला के साथ यहाँ पार्टनरशिप हुई है। केरला ने बेसिकली, हम बोले सिंपल टर्म्स में, तो केरला ने PM श्री स्कूल इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई करो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिन्होंने एक एमओयू साइन किया इटली के टेस्मेक एसबीए के साथ इन अक्टूबर टू इंट्रोड्यूस एडवांस सरफेस माइनर इक्विपमेंट को फॉर माइनिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। तो आइडेंटिफाई करो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, वो है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन इज रिन्यू एनर्जी, right? They have secured how much amount from Asian Development Bank recently for funding India's first round-the-clock peak renewable energy project that is located in Andhra Pradesh. Second question, IFC, International Finance Corporation, the arm of World Bank, they will be investing how much amount in Axis Max life insurance that will boost the solvency and support India's insurance for all vision of 2047. Then third question, in space, they along with SIDBI, they have launched how much amount venture capital fund. What is the amount of this venture capital fund that will boost India's private space sector? Fourth question, recently tell me PSEB appointed whom as the next chairman and managing director of Gas Authority of India Limited, of GAIL. Fifth question, tell me who has been elected as the UNESCO's Director General, 12th UNESCO's 12th Director General, and who he will be succeeding. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.